Hello students, welcome back. Today in this video lecture we are going to start with poem Fog. So this poem, a very short one, tells us about the nature of fog. Okay, so let's start with the poem. A very short one, it's not going to take long. So the fog comes on little cat feet. Now fog has been called cat here. ठीक है, फॉग को कैट से कंपेयर किया है. सो फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. जैसे कैट आती है ना, तो व्हेन कैट कम्स वी कांट हियर इट. ओके, सो जस्ट लाइक दैट व्हेन फॉग कम्स देयर इज नो साउंड ऑफ इट. देन इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. सो इट सिट्स देयर, ठीक है, व्हेन फॉग सेटल डाउन and it is there on the city and on harbor. वहाँ पे जब settle होती है looking over harbor and city. तो वैसे ही जब cat होती है, जो cat होती है, तो वो वहाँ पे कहीं भी अगर वो बैठती है तो वो कहीं भी देखती है, तो she is just it's sitting there and it's looking at something. So you won't even notice its presence. So just like that, fog जब होती है तो you won't even notice its presence, but yeah, it's there and you can feel it, you can look at it. On silent haunches and then moves on. And just like a cat, जैसे ही कैट होती है अपने haunches पे बैठती है, अपनी knees को bend करके वो वहाँ पे बैठती है and sitting there and looking at something, and just like that वो fog भी वहाँ पे है, it's there for some time. And जस्ट लाइक अ कैट जो वहाँ पे बहुत किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रुकती है, जस्ट लाइक दैट फॉग भी बहुत टाइम तक कहीं पे भी नहीं रुकती है एंड इट मूव्स ऑन. ठीक है, तो फॉग का जो नेचर है, इट हैज बीन कंपेयर्ड टू द नेचर ऑफ अ कैट. ये जैसे कैट होती है, यू वोंट नोटिस इट्स प्रेजेंस एंड यू वोंट नोटिस व्हेन इट कम्स और व्हेन इट मूव्स ऑन, व्हेन इट लीव्स द प्लेस. जस्ट लाइक दैट फॉग इज exactly like that. It comes, it stays for a bit and then it moves on. Okay, you won't even notice. Now let's look at the poetic devices. So metaphor, first of all, metaphor has been used, as I told you that fog has been compared to a cat, तो metaphor का use हुआ है. Then we have enjambment. Enjambment तो obviously है, as you can see the line has been continued to the next line without any punctuation mark. There is no punctuation mark, it's like a one single sentence है ना, कि the fog comes on it on little cat feet, तो एक ही line है. ठीक है, so enjambment has been used. Then personification, fog का personification हुआ है. ठीक है, comes on little cat feet and sits looking over the harbor, तो sits तो बैठ, फॉग के लिए यूज हुआ है कि वो बैठी है, तो that's your personification. Then analogy is when two things are compared. ठीक है, it's a comparison between two things on the basis of structure for the purpose of clarification. किन्हीं दो चीजों को जब कंपेयर किया जाता है, when their characteristics they match, क्लैरिटी शो करने के लिए. सो फॉग और कैट को कंपेयर किया है बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दे मैच समवेयर, सो दैट्स योर एनालॉजी. देन imagery has been used. When you read the poem you can imagine, right? You have this image of a harbor where the fog is settling and then it moves on. Then you can imagine a cat sitting on its haunches and it's looking at something, looking over the city or harbor. So you can imagine all that, right? That's your imagery. Now there is no rhyme scheme as such because it's a free verse poem. ठीक है, तो there is no rhyme scheme, free verse poem है. Okay, कोई rhyme scheme नहीं है इसमें. Then let's look at the solution. NCERT solutions भी कर लेते हैं. There is one question. What does Sandberg think the fog is like? The poet is Sandberg. What does she think कि fog कैसी है? तो fog is like a cat. Fog कैसी है? Cat के जैसी है. Then next question is, how does the fog come? It comes silently like a cat on its small feet. Then we have the next question. What does it in the third line refer to? यहाँ पे जो third line है poem की,
it, what does it refer to? It refers to the fog. यहाँ पे किसके लिए use हुआ है? Fog के लिए use हुआ है. Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. ठीक है, तो हमें पोम में से 3 things ऐसी निकालनी है जिससे हमें ये पता चले कि पोइट ने कैट से फॉग को कंपेयर किया है. ठीक है, सो पोइट डज नॉट एक्चुअली से इट, बट she has used a few things that we can say that yeah, the fog has been compared to a cat. जैसे यहाँ पे तो क्लियरली बोला है लिटिल कैट फीट. ठीक है, फिर इट सिट्स है ना, एंड देन ऑन साइलेंट हॉन्चेस. तो ये सारी चीजें क्या शो कर रही है? दैट पोइट हैज कंपेयर्ड कैट एंड फॉग टू कैट. ठीक है, so that was the poem everyone. I told you it's not going to take long, it's a very short poem, and that's it. There is no rhyme scheme. I have already told you the poetic devices and the question answers. I hope you understood. Thank you.